Hello. Very good evening, all of you. Acha, we'll have a small test. Before that, I'd like to do one correction from the last class. Actually, it skipped my mind. I'm so sorry. There is a question, no, size of operator. Let me give you another example to explain this. Say int A equal to 10, int B, then we say B equal to, something like this the question was, right? A plus plus say plus A, like this. Let's make it a little more simpler by just writing plus A. And then we were printing printf percentile D A comma B. Okay. So as we discussed last class, this will be size of, so 4 bytes, but this A will not be incremented. That was a mistake. Okay. B will not be incremented. Now, not be incremented. Why? Because size of is an operator and it cannot work on expressions. Fine. So the output here will be, I'll just write it here, size of any expression passed to size of operator
is not evaluated. Voice audible. Please rejoin. I'm audible, I think. So anybody it's not, I'm audible? Yes. So anybody for whom I'm not audible, please rejoin, but quickly because I'll give you the test link. So operator is not evaluated. Fine. So that is the reason here the output we will have is A will not be incremented. Okay. So the value of A will remain as 4 and B is size, that is 4. Is it clear, guys? All of you? So this was a small mistake that has happened. It skipped from my mind. So we had calculated A's values incremented, right? So that was a mistake that has happened. Okay, so I'll now just share the link with all of you. Very small quiz. Um, I have to check out because that is not taking some find the output types. So I've just taken theoretical types. Find the output types. I will give in another test. I have to find out how to do it. Okay, please do it fast. You do it. I'll do this. The remaining thing. Array, I have done it. Just done it. It is accepting, but so much people are trying to do it at a time. That's why. It will. Just keep a little patience. It will. Yes, Swarup, I have shared. Please check. जिनका हेवी ट्रैफिक आ रहा है रीलोड करो, आ जाएगा. Is it accepting now? Adesha, please reload the page and do it again. Yes, it is accepting. People are giving response. There may be some problem of your from your end. Already 10-15 response has come. So please refresh and do it again. Or it might have accepted already. If it is showing you have already responded, that means it is done. It will open. It will open. Just keep trying because so many people are trying. No, that is why. Try to open it in Chrome. Sometimes Internet Explorer makes a problem. So try to open it in Chrome. Who is the questions?
Done, everybody? There is never more than one correct answer, Saruna, Anubhav. Best answer you have to click. I'm just giving the page again. जिनका ओपन नहीं हो रहा करो, मैक्सिमम till 2-3 minutes more I can wait. Please do it fast. Five minutes, 5 question, it should take maximum 2 minutes time. ओपन नहीं हो रहा है करके गूगल सर्च करके डाल रहे हो. What's the benefit of cheating me? I don't understand. Two more minutes to go. I'll stop then. I think everybody has done it. Okay, I'm closing it. Anybody left? Guys, you don't have nothing to do with getting disconnected from Zoom or not. This is a Google form. This has got nothing to do with disconnection of Zoom.
Okay, so let's stop it now. Okay, so we will start with a new topic, functions. Now, what do we mean by a function? शुरू हो गए? Okay, what do we mean by functions? Now, see, in we have learned like this. No, f is a function of x. That will give me the result of x to the power 3 plus 2. Okay, g is a function of x. That will give you say square root of x minus 1. Okay, so now if I make a call to f of 3, what will be the result? It will be 3 to the power 3 plus 2. That is 27 plus 2, 29. Okay, similarly, we'll say g of 9 equal to square root of 9. Square root of 9 minus 1, that is 2. Okay, na? So what this f and g are, there are specific tasks that we perform on this particular argument that we are passing. So function is a specific task that is performed on the argument that we pass, and it processes it and returns a value. So in case of mathematics, functions normally always take an input, one, two, I mean many inputs also they can take. They have a specific task associated and they return value. Okay, function always return a single value. Same thing we can always replicate in a procedural programming language. So in procedural programming language, C is a procedural programming language. Okay. Now here, what is a function? We say a function is a named block of statement written to do a specific task. Okay. Function is always associated with a specific task. So that is why I always tell students that do not write 4 or 5 things in a function. Make it always smallest possible modules you divide it into. Then only you get the benefit of modular approach. So it is a name block of statement written to do a specific task. Now the function, it may accept argument. Generic term पहले करते हैं. It accept argument. It can be a single argument. It can be more than one argument. It can accept arguments, process them, and return a value. Okay. Next, a function may or may not accept arguments. It can return maximum one value or may not return at all. Okay, so these are a few basic things about a function. Next, let's see how function looks like. So every function, when we define it as the name of the function, input, return, and body. So first we write the return type. Okay, return data type, because this is what it is throwing back. It is not keeping with it. So we need a value, the data type to be known, because as the function is returning, it has to be held by the calling function. So we just write the return type. Then function name. Then parameter. I'll tell you the difference between argument and parameters. Okay. Then this is the function body.
So this is called a function definition. This is how we define a function. Now, for example, suppose we want to find the factorial of a number. Very simple example, let's take. And for this, we will first design the program, then we will see the code, how to work with it. Okay. Now, what are the various things that we require in order to find the question that is, or the problem that has been given to me is find the factorial of a number. Now, how do I do it? Now, this I'm doing for a very, very simple implementation. We can extend it to the most complicated implementation also. So how to do this? Why so many people are getting disconnected? Okay, so we write the main function. Okay. Now what we need a number. So first is declare variables, whatever I require. So first number is declare variables. Now these variables we can take here as integer. We'll take a number and we'll take a factorial variable to hold the factorial. Fine. Next job I need to do is I need to print the request to enter a number. We need to print the user request to the user so that the user will enter a number. Then once we do that, next job we need to do is read the numbers. Okay. Now once we have got the input with us, next job we need to do is check whether the input is proper or not. So validate the input. Now, when we validate the input, two options can be there. Either it is valid or it is invalid, right? Either it is valid or it is invalid. So check kare. If invalid, if not valid, or if not valid means if valid is returning a 0. If not valid, then what we do? Print error. This is the next job. Okay, and terminate. This is the two jobs that we need to do. Otherwise, if valid, then find factorial, print result. Okay, and finally program terminate, return. This is to terminate the program. Fine. So this is the you can say framework, or this is the design that we first make to solve the question. So anytime any problem statement is given to you, first learn to do this. So people who are having problem in writing codes, okay, first you do this. Any level of problem you may be having, first you need to do this. Then we will check for which of the jobs we have library functions available, for which of the jobs we have to define our own function. Okay. Like we all have already used it for printing the request, for reading the number, printf, scanf. Okay. Printing error, printing result. For these things, we can use library functions. We have printf, scanf. Then for validating input, for finding factorial, we do not have any such ready-made utilities. So we need to write, right? So in this case, we will see that for this, we can use library or built-in functions, predefined. Like printf and scanf. Okay, we can use printf and scanf, this type of functions we can use here. And for this, we need to write our own functions, that is user defined functions. Now,
when it is a user defined function, so what are the functions or what are the functions that I need to write, or how the functions will look like? So first function is validate function. So what it will do, it will take the input as the number and return you a Boolean value, true or false, right? So in a factorial, tell me which value is invalid. 0 का फैक्टोरियल तो 1 है. नेगेटिव नंबर्स, कैरेक्टर हम लोग दे ही नहीं सकते हैं बिकॉज इंटीजर मैंने टाइप लिया है. नेगेटिव नंबर्स, वेरी गुड. सो आज सी डज नॉट सपोर्ट बुलियन. आपको एसटीडी बुल से कर सकते हैं बट वी विल नॉट गो इनटू दैट. तो हम लोग क्या करेंगे, विल टेक इंटीजर, विल से इंटीजर वैलिडेट, एक फंक्शन लिखेंगे वैलिडेट. इसमें क्या पास करेंगे, नंबर, जो नंबर हमने इनपुट किया था, है ना. सो इंटीजर, this number we are going to pass, it is going to return what, it is going to return the valid or invalid status, true or false. Fine. And second one is factorial, it is going to accept the number whose factorial you need to find out, and then it is going to return the factorial of a number, the result it is going to return. Okay. Yes, people who are telling characters floats, see we cannot do it because I have already taken the data type as integer, so that scope is not there. Okay, only thing here that is possible is negative values. Am I clear? Okay, so sorry. So what we need to do now, based on this, we will write the code. I'll just show you how to do it. In detail, why everything is written, we'll discuss in anatomy class, but this one is the implementation. Okay. So declare variables हो गया. Print request, इस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, printf enter a number. ठीक है, खाली इसको रिप्लेस करते हुए जाओगे. ये क्या करेंगे, scanf. When you design, no, do not हाँ, long will be there, don't worry. Long आशीष मैं भी उसके बारे में कंसिडर नहीं किया मैंने. This is the basic thing that we are doing. उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हम लोगों का what type of input values we may get and what kind of various test cases that we may get. ठीक है, पहले इसको मतलब सिंपल डिजाइन से खड़ा करते हैं, उसके बाद उसका we will be doing it robust, we'll be making it robust to tolerate all type of values. Okay, so integer, and for your information, long is invalid here because in 32-bit integer itself is long integer. The only thing you can take is long integer. So long integer I will add later on. This is just a basic of function I'm teaching. So scanf, we will be accepting the number. So say num, we are accepting here. ये हो गया. उसके बाद validate input. Now see, without absolutely bothering about how to validate, simply use this function. ये function को लिख डालो. हमें पहले logic flow ठीक करना है. समझ में आया? How to validate, how to find the factorial, don't worry about that. First think that what to write. First fix the sequence. Then how to do it. पहले design बना डालो. Validate the input. कैसे करेंगे? ये function को call करेंगे validate. ये हमने यहाँ पे design करना है. It's written here. So validate, इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, num को पास करेंगे. जब पास करेंगे ना तो ये क्या देगा, true false. True false माने हम लोग उसको if में पास कर सकते हैं. If validate number, अगर ये false होता है, क्या लिखा है, if it is not valid then print the error. So if it is 0, then what we need to do, we need to print the error, right? So we say print enter non-negative number. Enter non-negative value. Okay. Now how do I terminate this? Now we know that main function terminates with return. Fine. Now what I told you, main function returns the error code, right? In this case, will your program work? The program will terminate. Why? Because user has entered a wrong input. ये पता होना चाहिए ना. तो error status return करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या return 1 कर देंगे. return 1 माने there is an error. ठीक है, each value का significance अलग अलग होता है, वो next class में समझाऊंगी. What is the
वैल्यू ऑफ रिटर्न 1. रिटर्न 1 का मतलब होता है यूजर इनपुट एरर. समझ में आया? यूजर इनपुट एरर कहाँ यूज करते हैं? समथिंग लाइक यू आर ट्राइंग टू डू अ डिवीजन, डिनोमिनेटर 0 पास किया है. यू आर ट्राइंग टू फाइंड फैक्टोरियल, नेगेटिव पास किया है. यू आर ट्राइंग टू ओपन अ फाइल, फाइल डजंट ओपन, रॉन्ग फाइल नेम और फाइल डजंट एग्जिस्ट, इस तरह से एक करप्टेड फाइल आपने पास किया है. इन ऑल दिस केसेस इट इज गोइंग टू मैंने यू शुड राइट अ रिटर्न 1. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 की जगह 3 भी लिख सकते हो, बट व्हाट सिस्टम अंडरस्टैंड्स दैट इज अ थिंग. For each type of error, it has got a signal. Okay, more on this we will discuss when I will tell you return values of main. Okay, so यहाँ पे हम लोग 1 लिखते हैं. For the timing of 1 और 0 दो चीज खाली याद रखो for simplicity. हाँ, yes, अवधेश अवस्था सुनोगे तब ना. You can return any value between 255, but each representing a different status. So 1 is for user input error. So normally user input के लिए हम लोग ये user गलत input दिया है ना, तो हम लोग 1 लिखते हैं इसके लिए. ठीक है, दिस इज अ कन्वेंशनल वैल्यू दैट वी यूज. इसके ऊपर ज्यादा डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं, आज बेसिक्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं. हो गया. अब देखो, इफ इट इज इनवैलिड देन द प्रोग्राम विल फिनिश हियर. रिटर्न हो जाएगा मतलब मेम खत्म हो जाएगा यहाँ पे. तो ये जो नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा फैक्टोरियल का वैल्यू निकालते हैं. तो वी से फैक्ट इक्वल टू फैक्टोरियल विल पास द नंबर. Okay, now once we pass the number, do you understand why I did not write else? Because if it is true, the program will terminate from here. ये नीचे आएगा ही नहीं. It's coming down because it is false. Clear? So we are writing printing the result. So we say printf percentile d and fact. Okay, return 0. Fine. Now tell me, will this code, now let's consider all the data are within the range. हम लोग beyond range data कुछ नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए long integer करना पड़ेगा. कुछ नहीं करना है, just यहाँ पे long लिखना है और यहाँ पे LLD print करना है, और कुछ नहीं है. That when we think about accepting all the values. Okay, अभी के लिए मुझे बताओ, will this particular code compile? Will this code compile? Kakon long इसलिए because there is a range of numbers, right? So as the range of numbers, so if it is a big number whose factorial you need to find out, then after a particular range it will come as negative. We have not described, छोड़ो, we have not declared itself, है ना? Why? Because when compiler will start reading, कंपाइलर को ये नहीं समझ में आएगा कि printf क्या है, scanf क्या है, validate क्या है, because आपने declare नहीं किया है, define नहीं, declare नहीं किया है. So it will give a compilation error. जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं ना, आप लोग वहां पे आपका एरर दिखाता है, आप क्वेश्चन पूछ लेते हो पटाख से. So we need to declare this. Fine. So for printf scanf क्यों करते हैं ये एनाटॉमी क्लास में, अभी के लिए जस्ट समझो. तो हम लोग हैश इंक्लूड लिखते हैं because the stdio.h function header file, it contains a declaration for printf and scanf. Okay, now what do we mean by a declaration of a function? All the students who are having conceptual doubts on functions, I'll request them to kindly concentrate. I'll cover anything and everything that you think about a function, so please do not hurry. Please do not start jumping to the next part. I'll cover when I'm telling I'll cover means I'll cover. अगर मैंने बोला कि नहीं फंक्शन खत्म हो गया और मैंने कवर नहीं किया, तो मुझे रिमाइंड कराओ. अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, we will do something called a prototyping here. Now I'll tell you why prototyping is required. Let me first do the prototype. Now what is prototyping? Prototyping is model building. Fine. Model building माने क्या, जैसे आपको एक बिल्डर आके आपका क्या बोलते हैं उसको, एक घर प्रपोज कर रहा है कि दिस इज द वे वी आर प्लानिंग टू बिल्ड अ ड्यूप्लेक्स. आपके पापा के पास आया है, तो वो क्या करेगा, ही विल गेट अ मॉडल ऑफ द हाउस. That yes, see in the ground floor this rooms are there, in the top floor this is the rooms are. Physically घर नहीं बना है. He will get the design, he will get it approved from his customer. If customer wants any changes, he will make it, right? So he will show prototyping. Prototyping is not a working one. It's not a functional model. It's a framework. It's a you can say it's a framework on which function can be developed. Okay, so it's a skeleton. तो कैसे लिखेंगे इसको, अब देखो यहाँ पे देखो कैसे दिख रहा है.
Validate is a function which is accepting a number and returning a number. So we say int validate int और कुछ नहीं बस. So इसका मतलब क्या है? कंपाइलर को पता चलता है ओके वैलिडेट क्या है. वैलिडेट इज अ फंक्शन. व्हाट इट इज डूइंग? इट इज एक्सेप्टिंग वन इंटीजर एंड रिटर्निंग वन इंटीजर. अब उस इंटीजर को लेके वो प्लस कर रहा है माइनस कर रहा है क्या कर रहा है? वी आर लिस्ट कंसर्न. Compiler is list concern. Compiler का काम क्या होता है? Any word that you are telling, whether it knows whether it knows it or it doesn't know it. Finished. Then we write int factorial int. Okay. Now question comes. Two ways you can do it. One is the entire function you can write here. Normally coding round में यहीं पे डाल देते हैं हम लोग. ठीक है? Because it's a coding round. But in real life coding it doesn't take place like that. I'll tell you why. अब देखो. जो if your father thinks about you can say having our own think about having your own house built, तो उन्होंने आर्किटेक्ट को बुलाया. अब आर्किटेक्ट क्या करेगा? He will get the design. This is the design. The design should be approved first, right? That it should be a workable design. So he will talk to his customer, he will talk to your grandparents, he'll talk to your parents, he'll talk to you all. What is your requirement? How you want the house to be? Then he will make a design. Once the customer is satisfied with this, then the actual mane satisfied mane kya? All the things that the customer wants, whether it is delivering or not. This is what we need to see. Okay, this is what we need to see. Until unless ये होता है, अगर वो सीधा एक घर बना के आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, वो आपको पूछा नहीं है कुछ नहीं, वो अपने आप से घर बना दिया. फिर आपको क्या बोल रहा है? अच्छा ये जो ग्राउंड फ्लोर में एक रूम है, इसको आप बेडरूम 4 रूम ग्राउंड फ्लोर में बना दिया, इसको आप बेडरूम बना लो. ठीक है, ऊपर रूम थोड़ा छोटा हो गया है, इसको एक को किचन बना दो, एक को टॉयलेट बना दो. तो इंसान रहेगा ग्राउंड फ्लोर में, ऊपर जाएगा टॉयलेट करने, ऊपर जाएगा खाना बनाने. That is not acceptable. So that is not the way it is done. It's always first designed. So in real life scenario, what happens? The project architect, okay, the chief architect of the project, the architect designs the project. They do what? They do the modeling. उसके बाद उनको पता चलता है ओके इन ऑर्डर टू मेक दिस फंक्शनल हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी. हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. Fine. So they just to make the thing functional, they do the prototype. जो लोग वेबसाइट वगैरह बिल्ड का अगर किसी ने किया है तो you all can relate. तो हम लोग सपोज एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेट के ऊपर वर्क कर रहे हैं. सपोज आपको टीएनपी डिपार्टमेंट बोलता है यू मेक अ वेबसाइट फॉर अस, okay, where we want a login for each of our executives and we want a login for our students also, we want a admin login also, and we want XYZ PQR all the मेन्यू ऑप्शंस विथ अस. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप हम में से हर किसी के साथ बात करोगे, है ना? उसके बाद आप क्या करोगे? आप सिंपली एक पेज बनाओगे, टेम्पलेट वगैरह डाल के एक पेज बना दोगे, उसमें मेन्यू ऑप्शंस आप डाल दोगे, कॉन्टैक्ट कंपनीज, स्टूडेंट्स, पोर्टफोलियोज, ऐसा करके आपने मेन्यू ऑप्शन डाल दिया. कोई भी मेन्यू काम नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए कोड लिखने पड़ेंगे. व्हाई डू यू डू सो मच टेक सम योर पेन? पहले आपने खाली एक होम पेज बना दिया. होम पेज बना के आप आके पहुंच गए सुजीत सर के पास. सर दिस इज द मॉडल दैट वी हैव क्रिएटेड. इसे बोलते हैं लो लेवल डिजाइन. समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं हाई लेवल डिजाइन. हाई लेवल डिजाइन माने इट्स विल जस्ट शो यू अ overall functional overall look and feel of the thing. It's a blueprint, right? Correctly said, it's a blueprint. So it will just show you. तो मेन्यू कोई भी मेन्यू में जैसे डेमो वर्जन नहीं आता है सॉफ्टवेयर का, तो वो आपको दिखा देगा कि ये ऑप्शंस रहते हैं. सो यू जस्ट चेक, सर विल जस्ट चेक कि उन्हें जो जो ऑप्शंस चाहिए वो उसमें है कि नहीं. तो क्या बोलेंगे? अच्छा ये ऑप्शन हटाओ, इसको इसमें ऐड करो, ये वहां पर डालो. आपने उसमें मॉडिफाई कर दिया. अब सोचो पूरा कोड करके पकड़ के आते तो कितना कॉम्प्लिकेशन बढ़ता वहां पे. समझे? उसके बाद आप जो जहाँ पे ट्रेनर पेज है वहां पे आप मेरे पास आते हैं कि मैम ये आपका होम पेज है, आप जरा देख लो. तो आई जस्ट चेक अटेंडेंस है कि नहीं, एग्जाम है कि नहीं, क्लास शेड्यूलिंग है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. रजिस्ट्रेशन नहीं, क्लास शेड्यूलिंग है कि नहीं. आई जस्ट चेक ऑल दोस थिंग्स. फाइन. तो असेसमेंट्स है कि नहीं, उसका स्टैटिस्टिक्स दिखता है कि नहीं. तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जो जो चाहिए, तो आई से नो नो, आई जस्ट नीड वन स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन हियर आल्सो, प्लीज ऐड इट. You will add, I don't need this registration is not my job, please take it out. So you take it out. Then you go to Abhishek sir,
You go to rip this like this one by one, you meet everybody. हर किसी के लिए आपके पास सिर्फ एक पेज है, उसके एसोसिएटेड कुछ भी नहीं है, समझ में आया? So this is what. Once it is freezed, फिर आप लोग तो कोई एक नहीं काम कर रहे, टीम में काम कर रहे हो, तो एक बंदे को पकड़ाते हो, तुम ये वाला काम करो, दूसरे को पकड़ाते हो, तुम ये वाला काम करो. So जो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट होता है वो पूरा प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में इस तरह से डिवाइड करता है, और उसके डिफरेंट यूजर्स कौन होंगे, यूजर्स के हु आर द वेरियस स्टेक होल्डर्स, व्हाट आर द वेरियस जॉब्स दे विल बी डूइंग, ये सारा लिस्ट करता है. Once it is approved, then individual each sub module is handed to the leader. टीम, एक एक टीम को दिया जाता है काम. टीम लीडर फिर क्या करता है, उसको फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ डिसोसिएशन करता है, इसके अंदर अभी क्या क्या काम आता है. फिर वो क्या करता है, आप जैसे लोग जो ज्वाइन करोगे आपको काम पकड़ाएगा. सो नेचुरली व्हेन यू विल सबमिट, उससे पहले ये चीज हो जाना चाहिए कि नहीं, ये तो सबसे पहले होता है ना. So that is why in general it is always a better approach to define the function afterwards. समझ में आया? पहले हम लोग उसका डिजाइन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग उसका डेफिनेशन लिखते हैं. दिस इज ऑलवेज अ बेटर थिंग टू डू. लेकिन कोडिंग में वो लोग क्या करते हैं ना, कोडिंग राउंड जब होता है तो ये चीज वो लोग सप्लाई कर दिया होता है, ठीक है. एंड दिस पार्ट दे विल जस्ट एक्सटेंड विद अ ब्लैंक फंक्शन, यू हैव टू जस्ट फिल द फंक्शन. कंपाइलर को क्या चाहिए बताओ, कंपाइलर को नाम चाहिए, तो अगर इसका सारा वर्क फंक्शनलिटी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे तो ये काम करेगा. अभी कंपाइलर इसको भी फंक्शन, इसको भी आराम से कंपाइल कर देगा, बट इट विल नॉट रन. व्हाई इट विल नॉट रन? बिकॉज एसोसिएटेड फंक्शन, ये फंक्शन क्या करता है ये तो हमें नहीं पता ना. सो दैट लिंकर विल डू. वो मैं नेक्स्ट क्लास आपको एनाटॉमी क्लास में सिखाऊंगी कि कैसे होता है ये चीज. So body of the function is required. So this is called a pre-declaration of a function, or this is called a prototyping. समझ में आया? This is called prototyping. तो इसे क्या बोलते हैं? This is called prototyping. और pre-define और prior declaration, pre-declaration of the function. ग्रेजुअली ये लोग क्या किया ना, इसको क्यों आजकल इतना ये किया जा रहा है, द रीजन इज व्हेन आजकल जो कंपाइलर्स आ रहे हैं, दिस कंपाइलर्स आर हाइब्रिड कंपाइलर्स. ओके, माने क्या, जैसे देखो एक C++ कंपाइलर है, आप उसमें C++ प्रोग्राम भी कंपाइल कर सकते हो, आप उसमें C भी कंपाइल कर सकते हो. तो C के लिए ना, when in a C++ compiler you're trying to write C, it will be automatically doing all the prototypings. इसलिए ये hash include उसमें लिखने की जरूरत नहीं होता है, उसमें प्रोटोटाइप करने की जरूरत नहीं होता है, because the compiler is flexible enough to adopt it. So current compilers are all that type. इसलिए आजकल के कंपाइलर में वो लोग क्या करते हैं ना, ऊपर ही फंक्शन का डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है. But if you go by the actual or a better way of designing, this is always a better way, I'll suggest. Again, it's up to you. So now let's write the function, or let's write the definition for this. ठीक है, तो definition कैसे लिखेंगे ये next on, इसमें खाली मैं लिख देती हूँ, इसके बाद इसका body चाहिए. So that means this is a validate function. This validate function के लिए हमें एक validate function call करने के लिए एक body चाहिए. Similarly एक factorial function, हमें एक factorial function भी चाहिए, है ना. तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे we'll say int validate int एक n लेते हैं, ठीक है. फिर यहाँ पे उसका बॉडी लिखेंगे, जो भी लिखना है, we will write here, right? We will write it. This is called the function definition. यहाँ पे actual function काम कर रहा है. Similarly, here we have int factorial int n. फिर यहाँ पे you will write the code to find the factorial. इसके साथ लिंक करेगा. So these are nothing but the, you can say the prototypes. Sorry, these are the function definitions. Okay, इसे बोलते हैं definitions. These are the function definitions. So this is and this is called definition. This is functions detailed work. So this is the function definition. That is function with complete body. Okay, so yeah, just we understood now how the program we are divided into smaller jobs. So what happens, a larger code is divided into smaller modules. Okay,
No, Ashish is asking that if I give only the prototype and won't define it, yeah, this green color code, it will not give you compilation error, but it will give you a linker error. Okay, this something like आप एक बुक में आपको इंडेक्स में आपको सपोज कुछ चैप्टर की डिटेल्स चाहिए, यू आर सर्चिंग फॉर सर्टेन डिटेल, राइट? नाउ यू हैव गॉट इट इन द इंडेक्स, आपने एक बुक का इंडेक्स देखा, देखा कि उस चैप्टर उसमें है, सो इंडेक्स देख के आप बुक खरीद लिए, बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू मैप टू द चैप्टर व्हाइल रीडिंग, so you compiled it, your compiler कैसे, compiler सर्च कर दिया, okay I am searching for x chapter is available here, तो आपने खरीद लिया। अब बुक लेके जब पढ़ना शुरू करोगे, दैट्स द रन टाइम। ओके, सो ये क्या करेगा, ईच इंडेक्स आइटम को अपना कॉरेस्पॉन्डिंग पेज के साथ लिंक करना शुरू करेगा, देन यू गेट अ लिंकर एरर दैट दिस पेज इज एक्चुअली मिसिंग एंड इट विल नॉट रन। Okay, so there are three phases in which it is done: compilation, linking and runtime. So this will give you a linker error. अगर आप प्रोटोटाइप लिखते हो, बॉडी नहीं लिखते हो, तो कंपाइलर एरर नहीं मिलेगा, कंपाइलर विल वर्क परफेक्ट, जीरो एरर्स, बट you'll get a linker error. ओके, अब ये आपने लिख दिया, लेकिन इसमें सपोज सम ऑफ द लॉजिकल मिस्टेक्स यू हैव डन, देन इट मे गिव यू अ रन टाइम एरर। ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास, लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, पूरा एंटायर एनाटॉमी आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी फिलहाल just concentrating on a single thing. I hope Ashish your doubt is clear. It will not give error. Ashish your doubt is clear. Okay, good. So please take a screenshot of this. We will move on to the next one. जिसमें I'll just distinguish between a predefined function and user defined function. Then we'll so go for type of functions. थोड़ा जल्दी करें. Okay. So next we'll see the difference between a predefined function and a user defined function. Prototyping is pre-declaration of a function. That's called prototyping. ये डेफिनेशंस में दूंगी, नेक्स्ट क्लास में पूरा डेफिनेशन दूंगी कंप्लीट, सारे टर्म्स का। सो आज खाली कंसंट्रेट करो समझने के लिए। So functions can be broadly of two types. It can be a predefined function, it can be a user defined function. Concepts are very much essential for doing anything. So what is a predefined function? Now predefined functions are pre-designed, pre-coded, pre-compiled functions. Okay, so these are pre-designed, pre-coded and pre-compiled. This is very important. These are pre-compiled functions. Okay, next. How they are made available? Somebody is asking that do we have to write function declaration first and then function definition?
इतने समय से मैं क्या समझा रही थी आपको? जो घर का एग्जाम्पल दिया, सबका एग्जाम्पल दिया, आप क्या सुन रहे थे? रिवर्स वे का मतलब ये नहीं है कि आप पहले डेफिनेशन देके बाद में डिक्लेरेशन दोगे. Definition includes the declaration. So either you write only definition on the first, then write main function, done, or else you write a main function, do the prototyping, and then do that before main put the prototyping, after main do the definition. That is also okay. Anything you're comfortable. जो whatever whenever I'm explaining, no, आपको लग रहा है मैं गाना गा रही हूँ. So आधा चीज आप सुनते हो, आधा चीज आप नहीं सुनते हो. After explaining for half an hour, you come back to where we were half an hour back and you ask the same question. If you're not understanding, ask. I never talk bullshit in the class. I never talk anything beyond the topic in the class. So whenever I'm explaining function, if I'm giving you some example which is related to day-to-day life, means it is related. So please concentrate. शादी में आके खाना खाने नहीं आए हो कि कोई गाना गा रहे हैं, आप आधा सुन रहे हो, आधा नहीं सुन रहे हो. डोंट कम टू द क्लास. आधे लोग ऐसे ही क्लास में म्यूट पड़े हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. So they are supplied in the form of libraries with the compiler. Compiler alag, library alag. Please remember, library is not a part of the compiler. Compiler is a core program which is reading your program and doing the translation. Okay, it is checking it whether it is correct or not, syntactically, semantically, then doing the code generation. Compiler is that. Library is a set of predefined functions already precompiled. Okay. आप जब आप एक लैंग्वेज जब इंस्टॉल करते हो, लाइक सी मैंने इंस्टॉल किया, कि मैंने जावा इंस्टॉल किया, कि मैंने पाइथन दिया, तो उसमें ना आपका many things are getting installed with it. It's not only compiler, it's not only interpreter. Okay, many things are installed. So library is one of them. Next. They are made available library is not a part of compiler. Library is a different folder, different set of files which contains compiled output. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास एग्जांपल दिया था ना, कि हमने एक a plus b c equal to a plus b लिखा था, तो एक सेट ऑफ कोड जनरेट हो रहा था, मैंने जिसको obj करके डाला था. उसी तरीके से कुछ कोड्स हैं, समझे? तो उस तरीके से एक कोड printf के लिए, उसी तरीके का एक कोड मैंने कंपाइल्ड आउटपुट scanf के लिए, उसी तरीके का एक कोड abs फंक्शन के लिए. इस तरह से कलेक्शन ऑफ सच कोड्स इज कॉल्ड द लाइब्रेरी. कंपाइलर का काम होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना. लाइब्रेरी का काम होता है ऑलरेडी कन्वर्टेड कुछ प्रीडिफाइंड कोड्स है जिसको होल्ड करता है विद सम नेम्स मैप्ड. जैसे प्रिंटफ के लिए अपना कोड मैप्ड हुआ है, स्कैनफ के लिए अपना कोड मैप्ड हुआ है. कौन से लैंग्वेज में? दे आर ऑल इन द लो लेवल. सो व्हेन यू मेक अ कॉल टू देम, दे गेट लिंक्ड. इज इट क्लियर, अभिषेक? So they are made available to the program after compilation, after source code is compiled. Why? Who can answer me why? Why the library functions or predefined functions are made available to the source code after it is getting compiled? Who can answer? Why it is made available? Exactly, very good. Because they're already compiled. Very good. These are already compiled. So we must supply them to the compiled codes only. है ना? Then what is the advantage? User need not know the logic.
only user needs to know how to use the function. Okay, how to use means call. This is the advantage. Kajol Singh क्या लिख रही है? By default it is there already if we miss purpose. हैं? By default it is there माने? They may be there until unless you call they will not come. But when they will come? Only after your compilation is done. Before compilation they are not supplied. They are supplied by they are checked and supplied by the linker, not by the compiler. Okay. So you don't supply the code क्योंकि आपको तो कोड पता ही नहीं है. इसके लिमिटेशन क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे. अब इस तरफ चलते हैं. यूजर डिफाइंड फंक्शंस. So these functions need to be designed by the user. Depending upon, I'll come to that. I'll come to that question. So these functions need to be designed by the user. Okay. So as they are coded by the user, supplied along with the source code. Okay, it's not readily available. So they need to be compiled. So are made available during compilation. Because ये कौन से लैंग्वेज में होता है? आपका सी अगर है तो सी लैंग्वेज में होगा. Okay, it should be, so they must be, they are made available, or they must be made available during the compilation. Unless you compile it, you cannot check it. Fine. So what is the limitation here? Limitation बोल सकते हो, or you can say it's all the botheration of the user, right? So user must know how to write the code. That is the logic. Okay. Now, whatever is the advantage of predefined, that is the limitation of user defined. Whatever is the limitation of user defined, that is the advantage of user defined. अब एक बात सुनो. Suppose some of your friends are coming to your place, okay? और आपने सोचा कि चलो कुछ स्नैक्स बनाते हैं. Let me prepare something. तो आपने क्या किया? दो ऑप्शंस है. One is you get a ready mix chili paneer, okay? And ready mixes, you just open it, you put it into micro oven and put some heat, it will be done. It's ready mix. Second is you want to cook it yourself. So this is ready mix. This is you want to cook it yourself. Okay, now let's compare and understand. So it is a pre-designed, pre-coded, pre-compiled. The cooking case में pre-designed माने recipe is already done. Okay, recipe is designed by somebody. कैसे बनाना? It's already done by the cook. Pre-coded माने cooking भी उसने किया है. उसने रेसिपी भी बनाया, मतलब किसमें कितना इंग्रेडिएंट कितना चाहिए ये डिजाइन उसने किया है, कितने वेरिएबल्स चाहिए, ओके, कब किसको प्रोसेस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, तो ये पूरा चीज डिजाइन के अंदर आता है. प्री कोडेड मैंने एक्चुअली कुकिंग इट, ओके. देन प्री कंपाइल्ड, इट्स अ कुक्ड आउटपुट, इट्स अ कुक्ड प्रोडक्ट, मैंने पोस्ट कुक जो प्रोडक्ट आता है, इट्स अ कुक्ड प्रोडक्ट. सो दे आर सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरीज, तो आपको रेडीमेड पैकेज में वो मिल जाता है. So when this is made available, when you want to serve the food, तभी आप खोलोगे और उनको दोगे. So at the time of serving, once compilation is done, so अगर आप उसके साथ कुछ और बना रहे हो, तो after you prepare your food, then you add this. So at the time of post compilation, it is done. Advantage क्या है? चिली पनीर मैंने जिंदगी में नहीं बनाया, ना मुझे बनाना आता है, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में. Then also I can serve you chili paneer by using a ready mix, right?
अब यूजर डिफाइंड मतलब आई वांट टू डू इट माई सेल्फ, तो मैंने आइदर यूट्यूब देखा और मैंने रेसिपी सर्च किया और मम्मी से पूछा समथिंग आई हैव डन, एंड फ्रॉम देयर आई विल मेक सम, अगर मुझे इंटरेस्ट है तो मैं कुछ प्लस माइनस करके वट एवर आई मेक माई ओन चिली पनीर रेसिपी। तो आई डू द डिजाइन कि मुझे कितना पनीर लाना है, कितना कैप्सिकम, कितना ये एक्स वाई जेड क्या क्या लाना है, coded by the user. So I need to prepare it. Okay. Then I need to cook it. So as I need to cook it, I will be naturally I'll be making it available during cooking. So when I can do it, if and only if I know how to cook, right? But there is a big but. So that's a big headache for me because I'm cooking. But suppose one of your friends is allergic to say garlic, or he doesn't take garlic, he doesn't like garlic at all, you don't want to put it, how do you separate it from a ready mix? Tell me. It's not possible. Garlic to still up without onion garlic search kar sakte ho. Doesn't, he's allergic to asafoetida, allergic to cumin, okay, zira. So allergic to zira, एक ready-made food में आप जीरा कैसे separate करोगे, वो तो raw form में है नहीं. So what this is called? This is called customization. हम लोग होटल में जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यार आप ना ये फूड बनाओ, मशरूम बनाओ बट विदाउट ऑनियन गार्लिक, दिस इज कस्टमाइजेशन. व्हेन यू गेट अ रेडीमेड समथिंग, यू कैन नॉट रेडी मिक्स, जो मार्केट में पैक्ड प्रोडक्ट मिलता है उसमें तो आपको पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसमें जीरा निकालोगे, आप उसमें से धनिया निकालोगे, इट्स नॉट पॉसिबल. So customization is not possible because customization means changing in the coding. Coding होगा तब ना change करोगे, ये तो compiled output है. So what is the limitation here? Customization not possible. जैसा है वैसे ही use करोगे. Because it is already compiled, as it is pre-compiled. और इसका advantage कि अगर हम खुद cook करें, नहीं देंगे, garlic नहीं देंगे, जीरा नहीं डालेंगे, I'll use some replacement for that. Okay, so it can be customized as user is developing the code. समझे? So these are the basic differences between a predefined and user defined function. Now the question comes that when it is user predefined, most of the time you may not know what is the logic that is been used. Sometimes we can also come across some predefined functions over which maybe user defined functions are getting advantage. Okay, you can write a better logic than the predefined ones. जैसे होता है ना कुछ कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप का सॉर्टिंग यूज करते हैं कि सर्चिंग यूज करते हैं, एंड बाय डूइंग सम रिसर्च वर्क वी हैव फाउंड आउट दैट वी विल, इफ वी विल चेंज दैट टेक्निक, maybe we get a better attain a better optimization. So in that case, instead of using that predefined function, you can always go for a there is a sort method available in C++. Sort method Java में भी है. तो ये जो प्रीडिफाइंड सॉर्ट होता है ना, ये पर्टिकुलर टाइप का सॉर्ट यूज करता है, बट सपोज सिनेरियो वाइज दैट सॉर्ट में नॉट बी सुटेबल फॉर योर डेटा, तो वहां पे आप रेडीमेड सॉर्ट नहीं करके आप अपना सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर सकते हो. दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस. So whenever it's your predefined, I mean it's your coding round. So coding round में normally जो problem वो लोग solve करने को देते हैं, you can use ready-made functions. Doesn't matter. Absolutely does not matter. If you know the sequence how to use it, if you know the functions, then you can use it. But they don't give it. They never give you a question which is based on 5 ready-made sequences. Okay, there must be some twist to it. There must be some logic applied to it because coding round is basically to test your logical ability. So it's always better that you know how to mend the or how to customize the like splitting is a function, or you can say concatenation functions and all. So reversing functions. So whenever you're doing it, instead of always using ready-made, do understand also the underlying logic. So if required, you may blend them to, do your own job. So for that, logic development is very, very much required. अदरवाइज लॉजिक कभी डेवलप नहीं होगा. जैसे मैंने बताया था ना आपको कि अगर प्रेप से बच्चे को कैलकुलेटर पकड़ा दिया जाएगा तो उसका कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा. सो लेटर ऑन हायर लेवल ऑफ आई मीन अलजेब्रास एंड ऑल ही कैन नॉट डू, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलजेब्रा नहीं कर पाएगा आपका. इट्स एज सिंपल एज दैट. Okay, so please take a screenshot of this. We'll move ahead. Is this clear with all of you? This is a very, very simple thing, basic thing. So all of you know this. Just I'm preparing this note so that interview answering will become easier for you all.
कभी कभी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को भी इतना ज्यादा बेसिक कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसके लिए वो लोग कभी प्रिपेयर ही नहीं होते हैं. We being computer science students, we take many things for granted कि यार हम कंप्यूटर साइंस के हम लोग यहाँ से 1 से अगर 100 है ना हमें 50 के ऊपर से ही पूछेगा हमें. तो कभी कभी जब 0 1 की तरफ आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं ना उसको अज्यूम करके बैठे हुए होते हैं, ये तो ऐसा होता ही है. So we are not able to answer that, and that is the main feedback of many seniors. That's a feedback of many executives in companies also. Basics तो इनको नहीं आता, उनको ज्यादा क्या पूछे. So that way. Okay, खाली screenshot मत लो. Every day, every class, I'm requesting all of you that please maintain your own notes, seeing the screenshots so that you remember them. तो फंक्शंस जो होते हैं, पहला एक कैटेगरी का फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं दूसरा चीज बताऊंगी. आज ये सिंगल शायद होगा, लेट्स सी. सो दिस इज कैटेगरी 1, दैट इज फंक्शन. फोर टाइप्स होते हैं. फंक्शन एक्सेप्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्निंग वैल्यूज. फंक्शन एक्सेप्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, नॉट रिटर्निंग वैल्यूज. फंक्शन नॉट एक्सेप्टिंग बट रिटर्निंग. फंक्शन नॉट एक्सेप्टिंग, नॉट रिटर्निंग. अलग अलग यूटिलिटीज होते हैं इन फंक्शंस के. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज फंक्शन एक्सेप्टिंग arguments and returning a value. दो एग्जांपल लेंगे. एक तो पहले हमने जो लिया था अपना फैक्टोरियल वाला वो लेंगे. दूसरा एक सिंपल ऐड फंक्शन लेके देखेंगे कैसे काम करता है. ओके, तो पहला वाला सिंपल सा सम ऐड फंक्शन लेते हैं. तो वी राइट हियर int add int. अच्छा ये बाद में, पहले मेन फंक्शन. मैं ये बार बार दिखा रही हूँ बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी दैट दे आर हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग अ कोड, designing a code. So I'm starting from very scratch so that can do it easily. Then we need to accept it. We say scanf percentile d a and b. Then in order to find the sum, suppose we have a sum variable here s, and we say s equal to, we call a add function, add a comma b. Okay, and then after getting the result I'll simply print it. So I'll say print. You can write here also sum equal to, and as the job is done we just write return 0. Okay, now we will do a prototyping on the top and write the definition below, or else let me write the function on the top also. Many students are not able to digest that I'm doing twice, so let's do it as this way. Doesn't matter, you can write it anyway. So I'll write int x, int y. I'll explain about this, what these are. Then here what we're doing, this a and b are passing. This a is accepted by x, this b is accepted by y. So we will be returning the addition of it. So it's a return x plus y. Please mind you, this parenthesis is optional, you may not write it. Okay, so this is the way we are writing it. This is the first one. सेकंड क्वेश्चन अ लिटिल बिट. अब इसके लिए ना एक्चुअली ऐड के कोई क्या आप सोचोगे क्या यार एक लाइन ही है तो यहीं पे लिख देते हैं हम लोग. व्हाई शुड आई कॉल अ फंक्शन? क्वाइट नेचुरल. फॉर दिस स्मॉल थिंग्स वी मे नॉट कॉल द फंक्शन, राइट? तो लेट्स टेक अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग हियर. तो सेम ये मैंने ऑलरेडी लिखा था, आई जस्ट राइट इट क्विकली. फैक्टोरियल वाला. So we have one int num, we have one int fact. Then I'll just accept, I'll say scanf percentile d ampersand of num. Okay. Then we validate. So we say if validate num equal to 0. You may write just if validate and then पहले factorial लेके बाद में भी कर सकते हो. Then I say printf. And we write a return 1. And here I'll just put factorial. I'll say fact equal to factorial int num, and we'll print the result. We'll say printf percentile d. Okay, and we'll complete the program. Return 0. Done. Okay.
So now let's write the function for this. So what is the first function? First function is validate. So how to do the validate function? I'll say int validate. क्या लेंगे इनपुट? नंबर को लेंगे INTN. तो कब पता चलेगा नंबर वैलिड है कि इनवैलिड है? इफ इट इज नेगेटिव इट्स इनवैलिड. So we'll simply write here if n is less than 0, what we say? It's invalid. We'll just say return 0. अगर ये लेस देन 0 है तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा. तो नीचे आके क्या लिख देंगे? रिटर्न 1. समझ में आया? मैंने एल्स नहीं लिखा है, समझ में आया? बिकॉज द फंक्शन विल टर्मिनेट. रिटर्न माने फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है. So if it is less than 0, function will terminate here only. It will not come down. It will come down when actually this is not entering to this. Then we write a factorial. You can write factorial in many ways. I just put a looping one. Looping भी मैंने नहीं पढ़ा है, but just assuming that आप लोगों को पता है. नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लूपिंग में पढ़ाया जाएगा. So int f equal to 1 मैंने ले लिया, and then I'll just put the code while n is greater than 1, f multiplied equal to n minus minus. Okay, and then we write here return f. समझ में आया? So while n is greater than 1, f equal to f into n minus minus. ठीक है ना? So this is how we have written the function here. Now let's see how they work. So first let's see this particular function. So this is the main function that we have. Okay, and let me draw another function boundary for your sum function. This is the sum function that you're calling. So in the main function we have 3 variables taken. One is a, second is b, and the third one is sum. 3 variables taken. Okay, now let me write it as, so this is main function, this is a, this is b, and this is sum. Now suppose the user has given the values as 15, 25. Okay, 2 numbers the user has input, 15 and 25. Okay, so 15, 25. Okay, now how you are making a call to the add function? You are making a call to the add function by passing the values of a and b. Like suppose I will say that Shreya is my add function. Okay, Shreya is my add function, so I'll call her. How do I call her? I will throw to, in my one hand I have suppose a blue pen, and in my left hand I have a black pen. So I throw it towards Shreya. Shreya I call, and when she's coming I'll just throw these 2 pens. So how she will come? She will come catching it. Okay, so I am using my hands as variables, blue and black pens as the values, right? So what I am throwing? I am throwing the values. मैं हाथ फेंक रही हूँ कि मैं पेन फेंक रही हूँ? पेन फेंक रही हूँ. So I am throwing the values. So how she will catch it? She may use her own hands. तो मेरे पास में वेरिएबल का नाम लेफ्ट हैंड राइट हैंड, उसके पास में वेरिएबल का नाम लेफ्ट हैंड राइट हैंड. बोलने का मतलब है, so whenever you are passing these values, okay, whenever you are passing these values, so let's pass values here. So we will pass 15 here, and we'll pass 25 here. When you will pass values, the other end, the function will be using, so what these values are called? We call them arguments. So arguments are the values that we pass. Okay, and when we pass them, now the other hand, when the function will come, function is going to receive it, right? So function is going to receive it. So function कैसे receive कर रहा है? Function 2 variables से उसको receive कर रहा है. तो ये मेरा function है जो कि 2 variables से उसको receive कर रहा है. ओके, रिसीव कर रहा है. तो इन वेरिएबल का नाम, अब देखो वो अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड में कैच कर सकती है, और एल्स शी कैन यूज 2 कंटेनर्स आल्सो. लेफ्ट हैंड राइट हैंड यूज करेगी तो नाम ए बी रहेगा. अगर कंटेनर यूज करेगी तो नाम हमने चेंज कर दिया, नाम हमने एक्स और वाई डाल दिया यहाँ पे. समझ में आया? So even if the name is a and b, there are 2 separate variables. They belong to the add function. They are not the same a and b that you are having in the main function. Am I clear?
When I throw, left hand is Anukampa's. When Shreya catches, left hand is Shreya's. So two left hands are there simultaneously. Understood? So A और यहाँ पे A लिख दोगे मतलब नहीं है कि same variable है. They belong to a different function. Please respond yes if you have understood. Good. So now this 15 that you are passing, okay, this 15 that we are throwing will be now caught by whom? The corresponding variables, right? So now how much we have here? We have hold 15 and 25. Got it? So now the variable have hold the value 15 and 25. Got it? Now what it will do? क्या लिखा है? Return x plus y. So the function is going to return. What the function is going to return? मैंने इसलिए आपको दिखाया because we do not have space in the function to hold this. ठीक है, फंक्शन के अंदर रहता है, फंक्शन के अंदर स्पेस रहता है, बट अलग वेरिएबल नहीं रहता है. So this 40 that you are returning, function is not using a separate variable to hold it. समझ में आया? function is having a space for the return value. उसी स्पेस में वो 40 को स्टोर कर देता है. It's not creating a different variable for that. So this 40 that you are returning, this 40 you are holding by s. So ये आ गया यहाँ पे 40. This is how they will work. समझ में आया? तो आपने उसको आर्ग्यूमेंट भेजा जिसने उसको पैरामीटर से होल्ड किया और ये आपका रिटर्न वैल्यू. ओके, so these two are what? These two are arguments. This 15 20 are what? These are arguments. Okay, these variables, what these are? These are parameters. This is what? This is the return value. समझे? अब हम लोग क्या करेंगे? We will be seeing the other one. ठीक है, अदर वन. अब देखो जैसे ही रिटर्न वैल्यू आता है ना, इट इज एक्चुअली इन द स्टैक. सो मेन इज पुश्ड इन द स्टैक, अबव मेन आर्ड इज पुश्ड. तो जब तक आर्ड को आप पॉप नहीं करोगे, you will not able to use main again. So that is why once the function is completed, it gets dereferenced. Dereferenced माने मेमोरी से उसको निकाल दिया. समझ में आया? So the function returns, it gets dereferenced. Now let's see this one. तो यहाँ पे ये हमारा मेन फंक्शन. मेन फंक्शन में अपने पास दो वेरिएबल है, num and fact. ओके, ये स्टैक में एक के ऊपर मैंने एक जाएगा दूसरा आएगा, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल जस्ट मैंने put one, cut it and put the other one. So this is the main function. This is the variable num. This may be quite easy, guys, but please learn to draw. Typically, this is very, very helpful in interviews in order to give a significant impression on the interviewer. It's very much essential that I should be able to draw. Until unless I have this picture clear in my mind, I cannot draw. No, A, B are not parameters. Kakon, parameters are the ones that functions accept. Yeah. When you define a function, whatever you write here, this is called a parameter. This is a variable. This is the argument. This is the parameter. समझ में आया? So A and B are variables to the main function. They are not parameters. When you pass it, until unless you pass it to function, they will not be called arguments. Okay, Aman? A and B are variables to the main function. When they become argument, if and only if I pass them to the function. And when they become parameter, if these are the name of the variables through which a function is accepting some arguments, then only. Otherwise, they are not called parameters or arguments. Parameter, argument are relative terms if and only if they're used in functions. Otherwise, no, they're simple variables.
पैरामीटर्स आर कंपल्सरी वेरिएबल्स क्रिएटेड व्हेन यू क्रिएट द फंक्शन. मतलब जैसे फैक्टोरियल INTN है ना, तो ये कंपल्सरी वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है जो फैक्टोरियल के अंदर बनता है. So this is num and this is fact. Okay. So ये हो गया आपके num. Suppose मैंने accept किया, suppose 5 is the value that is been entered by the user. हो गया. So this is the part 1 done. Then हमने क्या किया, इसको हमने ये 5 को हमने throw किया किसके ऊपर. We have used this 5 to, we have passed this 5 to make a call to validate. Okay, make a call to validate. So दैट्स कॉल्ड वैलिडेट फंक्शन. मैं जैसे दोनों का पैर दिखाऊंगी तो इसलिए मैंने साइड किया. ये एक्चुअली एक के ऊपर एक ही होता है, एक जाता है दूसरे उसके ऊपर चढ़ जाता है. आई शो यू इन रिकर्शंस इन अ प्रॉपर ड्राइंग. हाँ, अभी के लिए इसको ऐसे देखो सो दैट दोनों दिखें साथ में. तो यहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल लिया है. क्या वेरिएबल है? एन वेरिएबल है. आप नाम भी ले सकते हो, मैंने एन लिया है. सो दिस इज द वैलिडेट फंक्शन and this is the n variable, right? So this n variable को अभी क्या मिलेगा? 5. दिस दिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट से इसी तरह से ड्राइंग करना सीख जाओगे ना. ड्राइंग करने के लिए 2 मिनट लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग 5 मिनट में फिर हो जाएंगे. यू डोंट नीड टू बॉदर मच. सो नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू रिटर्न this as it is non-zero. This is going to return to the main function as 1, right? So 1 means it is a valid value, so it is returning 1. So as it is returning 1, now this will be what? Dereferenced. So ये हो गया इसका काम, ये dereference हो गया. उसके बाद हमने क्या किया, we have made a call to, इसी के ऊपर एक्चुअली आएगा. ठीक है, we have made a call to factorial function. अब देखो अगर ये 0 रिटर्न करता तो ये कॉल होता ही नहीं. So as it is returning 1, it will, sorry, as it is returning 1, it will initiate the call to this function. Okay, this one will initiate the call to this function by passing how much to it? By passing 5 to. ये कौन सा फंक्शन है? ये फैक्टोरियल फंक्शन है. फैक्टोरियल फंक्शन जब आएगा तो उसके साथ क्या लेके आएगा? 2 वेरिएबल लेके आएगा. उसी हिसाब से उसका साइज बनेगा फंक्शन का. So we will create one variable here and the second variable here. क्या क्या variables हैं? N and F, right? So this variable is N. They all are integers. Character में से थोड़ा छोटा block draw करोगे. So this is N and F. So let's take N and F. So this is N and this is F. Initial value of F कितना दिया है? 1 दिया है. Okay. अब N को क्या मिलेगा? ये जो 5 हमने पास किया, ये जो 5 पास किया, आ गया इधर इधर. अरे भाई, हाँ ये 5 ये यहाँ. सो इसको कितना मिला? 5. अब उसने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया. फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू क्या बनेगा? What would happen if you didn't write return 1 in validate function? Nothing will happen. The program will come down. माने आप अगर यहाँ पर टर्मिनेट नहीं करते हो, then it will come down and find the factorial. अगर else लिखते हो, nothing, but system will not get a proper message. उससे क्या होगा मैं बताऊंगी तो बोलिए. I'll tell you the repercussion of it. So now it will calculate the value as 120. Okay. Then it is going to, today I'm concentrating only on how to write the function. That's all. So ये f ये return कर रहा है. How much it is returning? 120. So it is returning the value. $120. Okay, and it is getting what? 120. Clear? So now if we see here, this n that we are having, these are called what? These are the parameters. Okay. This num, for that matter ये fact और ये भी सारे, these are called arguments. मैं खाली एक को relate कर रही हूँ इसलिए दिखा रही हूँ arguments.
this main is the calling function. ये कॉल कर रहा है, so this is the calling function. And these two, अच्छा ये जैसे खत्म होता है ये भी क्लोज हो जाएगा ना, ये भी reference. So these two are called the called functions or callee. Okay, called or callee. ये दोनों. num is a variable in the main function. तो मैंने कब मना किया काकुन? Did I write num anywhere else? Num is a variable in the main function. When I pass this num to validate function to another function, this num is becoming a carrier, right? So the value of num will be passed. So what is the argument? 5 is the argument. The value of num becomes the argument. समझ में आया? Arguments are the values passed when a function is called. Okay, arguments are always values. Parameters are the variables, those hold the values passed as arguments. Okay. Next, your arguments are called now guys, what is a formal parameter? What is the actual parameter? Who can tell me? Which is a formal, which is a actual? Who can tell me? Very good. Any variable is formal, any value is actual. समझ में आया? Any value is actual, any variable is formal. So arguments are called actual arguments. Or also called actual parameters. बहुत confusion होता है इससे. हमेशा ध्यान रहे arguments are actual because they are values. Parameters are variables, so they are formal. Parameters are called formal arguments and also formal parameters. Okay, only argument, only parameter के बीच में difference है. But when we say formal and actual, there is a I mean जो formal parameter है वही formal जो formal argument है वही formal parameter है, जो actual argument है वही actual parameter. समझ में आया? Clear? Now please take a screenshot and let's call it a day today. Next class में आपको इसके बाकी 3 variations बताऊंगी. कहाँ पे किसको यूज किया जाता है बताऊंगी. Then I will tell you the return significance of return value. बहुत ज्यादा important है. वो करने के बाद टाइम बचा तो एनाटॉमी में जाएंगे, नहीं तो एनाटॉमी नेक्स्ट में पढ़ेंगे. How to write a function once we understand advantage of a function also. What are the various advantages of a function? And also there is a cost that is related with the functions, which is very very important to know. तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास सीखेंगे.
Taken the screenshot? Should I close? Okay, someone wanted the first page. Is this the one you wanted? I think Shivam probably. Somebody. Yes? Okay. Second page. Naseem. Mubashir Naseem. Done? Okay. चलो चलते हैं फिर. See you in the next class. Function get dereferenced when they read return statements, when they execute return statement. When they execute it, I'll show you demonstration next class. जैसे मैंने पिछले क्लास में दिखाया था ना, वैसे एक रिटर्न का मैं आपको दिखाऊंगी next class रन करा के. Okay, so just hold until next class when we learn what happens when we return actually, why it gets dereferenced and how it gets dereferenced, how a call takes place. ये सारा चीज subroutine call कैसे होता है ये मैं next class दिखाऊंगी. Okay, we'll have a visual representation. चलो, take care.